Assalamualaikum. My name is Noshin Nisar, MS second semester, and my co-members are Sajida Parveen, Ikra Fatima, and Umay Farwa Moid. My presentation topic is error in rectangular rule. First of all, I will discuss history of rectangular rule. Rectangular integration is a numerical integration technique that approximates the integral of a function with a rectangle. It uses rectangles to approximate the area under the curve. Here are its some features. The rectangle's width is determined by the interval of integration. One rectangle could span the width of the interval of integration and approximate the entire integral. Alternatively, the interval of integration could be subdivided into n small intervals of equal lengths, and n rectangles would use to approximate the integral. Each small rectangle has the width of the small interval. The rectangle's height is the function's value at the midpoint of its base. Within a fixed interval of integration, the approximation becomes more accurate as more rectangles are used. Each rectangle becomes narrower and the height of the rectangle better captures the values of the function within that interval. This method is inspired by the use of Riemann sums to calculate the integral. Roughly speaking, the limit of the Riemann sums of a function as partition becomes finer is the Riemann integral. A function is Riemann integrable if this limit exists, and the Riemann sum becomes closer to the Riemann integral with a sufficiently fine partition. Recall that the area of a rectangle just the base multiplied by the height. Area of rectangle is equal to base cross height. Next, I will discuss derivation of error in rectangular rule. Ij approximate hfj and ej is equal to ij minus hfj. Ej is equal to integral xj to xj plus 1 f of x dx minus hfj. And the next step, we will add and subtract xj from the function. Integral xj to xj plus 1 and f of xj plus x minus xj dx minus hfj. And then we apply Taylor series on it, and integral xj and xj plus 1 f of xj plus x minus xj over 1 f prime of xj plus x minus xj square over 2 factorial f double prime of xj plus so on and minus hfj. Then we integrate it and put limits in this term, lower and upper limit in this term, and then h is small, so neglecting higher power. Then we'll get ej approximate h square over 2 f prime of xj. Now e is equal to integral a to b f of x dx minus h summation j is equal to 0 to n minus 1 f of j, and we divide it into small intervals named I0 plus I1 plus In minus 1 minus h and f0 plus f1 plus so on fn minus 1. Then we'll get I0 minus hf0 plus I1 minus hf1 plus so on In minus 1 minus hfn minus 1, and we can write it E0 plus E1 plus so on En minus 1. Approximate h square over 2 factorial f prime of x0 plus h square over 2 f prime of x1 plus so on h square over 2 f prime of xn minus 1 less than h square over 2 f prime of t plus h square over 2 f prime of t1 plus so on h square over 2 f prime of tn minus 1. So E absolute less than n h square over 2 max t lies between h to b and f prime of t absolute. E absolute less than equal to n over 2, and we'll put the value of h b minus a over n whole square max t lies between a to b and first order derivative absolute. E absolute less than equal to b minus a square over 2n max t lies between a to b and f prime of t absolute is the error of rectangular rule and is called error bound when f of x is constant function. Then E absolute is equal to 0. Next, example 1, integral 1 to 2 e raised to power 1 over x dx, and we take n is equal to 15, and we take first order derivative f prime of x is equal to minus 1 over x square e power 1 over x, and we apply upper and lower limit, and we put upper and lower limit
in the first order derivative. Firstly, we put lower limit f in the first order derivative f prime of 1, and we'll get minus 2.71828, and then we'll put upper limit in the first order derivative and we'll get minus 0.41218. Then E absolute less than equal to 2 minus 1 square over 2 into 15, and 2 first order derivative into first order derivative absolute 2.71828, and we take E absolute is equal to 0.090609. Example 2, integral 0 to pi sin x dx, and we take n is equal to 25. Similarly, as example 1, we take first order derivative f prime of x is equal to cos x, and we put limits, upper and lower limits in the first order derivative. F prime of 0 is equal to 1 and f prime of pi is equal to 0.998495, and we'll get E absolute is equal to 0.1975510. Next theorem, let f prime be continuous on a to b close interval, then for some z belongs to a to b close interval, I minus I r is equal to 1 over 2 b minus a h f prime of z is equal to of h. Proof, we first show when h is equal to b minus a, it is true, that is I minus I r is equal to 1 over 2 b minus a square f prime of z for some z belongs to a to b closed interval. Equation 1. For every x belongs to a to b closed interval, the Taylor series expansion gives f of x is equal to f of a plus x minus a f prime of zx for some zx belongs to a to b closed interval. Then I minus I r is equal to integral a to b f of x dx minus f of a and into b minus a. And after simplification, we can write it integral a to b f of x dx minus integral a to b f of a dx. And we can write it integral a to b into f of x minus f of a dx, and integral a to b x minus a f prime of zx dx. And by mean value theorem for integral, we will get f prime of z integral a to b x minus a dx, and we will get 1 over 2 b minus a square f prime of z. Now let a to b close interval be divided into n equal subintervals by x0, x1, xn into up to xn with spacing h is equal to b minus a over n. Applying equation 1 to subintervals xi to xi plus 1, we have x integral xi to xi plus 1 f of x dx minus f of xi into h is equal to xi plus 1 minus xi square over 2 f prime of zi is equal to h square over 2 f prime of zi. For some zi belongs to xi and xi plus 1, so we have I minus ir is equal to integral a to b f of x dx minus h summation I is equal to 0 to n minus 1 f of xi is equal to summation, we take summation outside is equal to summation I is equal to 0 n minus 1 and integral xi to xi plus 1 f of x dx minus h summation I is equal to 0 to n minus 1 f of xi. Summation I is equal to n 0 to n minus 1 1 over 2 h square f prime of zi, and by mean value theorem for sum we'll get f prime of z 1 over 2 n h square, and we'll get 1 over 2 b minus a h f prime of z. Next we will discuss advantages and disadvantages. First one is let us work very well for smooth integrands. Second one is don't work so well for discontinuous integrands. Third one is have good projection onto coordinate axis. Fourth one is finite sequence. Fifth one is good error posterior estimates. Sixth one is some priori estimates, sometimes pessimistic. Seventh one is using more rectangles will make the algorithm add more numbers. That is, the algorithm must do more work, it must add more smaller values. Next, applications. Using more rectangles will give us a more accurate approximation of the area under the graph. Using the rectangle rule to approximate the using the rectangular rule to approximate the
Assalamualaikum. My name is Saida Parveen. I am a MS student. Today my presentation topic is error in trapezoidal rule and my group member name is Nishin Nisar, Ikra Fatma and Farwa Mohit. First of all, I will discuss the history of a trapezoidal rule. Then I discuss error in trapezoidal rule. Then I derive error in trapezoidal rule. And I take some example of error in a trapezoidal rule. Then I will discuss theorems related to the error in trapezoidal rule. And I will also discuss advantages and disadvantages. At the last, I will discuss the applications. History. A 2016 paper reports that the trapezoid rule was in use in Babylon before 50 BCE for integrating the velocity of Jupiter along the ecliptic. In mathematics and more especially in numeric analysis, the trapezoid rule, also known as the trapezoid or trapezium rule, is a technique for approximating the definite integral. The trapezoidal rule works by approximating the region, the graph of the function f of x has a trapezoid and calculating its area. Error is equal to minus b minus a cube over 12 and square f double prime of xi. It follows that if the integrand is concave up and thus has a positive second derivative, then the error is negative and the trapezoidal rule overestimate the true value. This can also be seen from the geometric picture. The trapezoids include all the area under the curves and extended over it. Similarly, a concave down function yields an underestimate because area is unaccounted for under the curve, but none is accounted above. If the interval of the integral being approximated including an inflection point, the error is harder to identify. Several techniques can be used to analyze the error, including Fourier series, residue calculus, Euler-Maclaurin summation formula, polynomial interpolation. It is argued that the speed of convergence of the trapezoid rule reflects and can be used as the definition of classes of smoothness of the function. Now I will derive error in trapezoidal rule. As we know that trapezoidal rule is integral a to b f of x dx is equal to h into y naught plus yn over 2 plus y1 plus y2 up to so on yn minus 1, where y0, y1, y2 and up to so on yn are the values of if y is equal to f of x at x0, x1, x2, x3 and up to so on xn, and where h is equal to b minus a over 2. Now I apply the Taylor series expansion f of x about x0 is. Then I get equation number 1. I integrate equation number 1 with integral x0 to x1 f of x dx. After the integration, I put the upper limit and lower limit in this equation. Then I put f of x0 is equal to y0 and x1 minus x0 is equal to h. Similarly, x1 minus x0 is equal to h and f prime of x0 is equal to y0 prime. Similarly, x1 minus x0 is equal to h and f double prime of x is equal to y0 double prime. Then I get equation number 2. As we know that the area of the trapezium is x0 to x1, a0 is equal to h over 2 y0 into y0 plus y and y1. Now I put the value of x is equal to x1 in equation number 1. In this equation, I put the value of x is equal to x1. Then I get this equation. Now I put the value of f of x0 is equal to y0 and x1 minus x0 is equal to h
and f prime of x naught is equal to y naught prime. Similarly, x1 minus x naught is equal to h, and f x naught double prime is equal to y naught double prime. Now I put the value of y1 in equation number 3. Then I get equation number 5. Now I subtract equation number 5 in from equation number 2. Equation number 5 subtract from equation number 2 in this equation. Then I get minus h cube over 12 y naught double prime. This is a principal part of error in x naught to x1 is minus h cube over 12 y naught double prime. Similarly, principal part of error in x1 to x2 is minus h cube over 12 y1 double prime, and up to so on. The principal part of error and up to so on the principal part of error in xn minus 1 to xn is minus h cube over 12 yn minus 1 double prime. Then I take the total error E is equal to minus h cube over 12 into y naught double prime plus y1 double prime, and up to so on yn minus 1 double prime. Then I take the absolute of the error, which is equal to nh cube over 12 m. Now I put the value of h, and after the simplification I get this relation b minus a raised to power 3 over 12 n square m, where m is equal to max absolute value of y naught double prime or y1 double prime of absolute, and up to so on yn minus 1 double prime absolute. Now I discuss our example. Estimate the error in approximating the interval with n is equal to 4 using the trapezoid rule. Integral 1 to 3 1 over x plus 2 raised to power 2 dx. First of all, I will take the first and second derivative. First derivative is equal to minus 2 over x plus 2 cube, and second derivative is equal to 6 over x plus 2 raised to power 4. Now I take the maximum value of f second derivative, its absolute, in the interval 1 to 3. When I put the value of x is equal to 1 in the second derivative and I take absolute, then I get 2 over 27. When I put the value of x in the second derivative and I take absolute of the second derivative, then I get 6 over 625. But I choose the maximum value of the second derivative, which is 2 over 27. Then I put the all values in the formula. Then I get error is equal to 0.003086. Now I will discuss the second example of error in trapezoidal rule. Estimate the error in approximation the interval with n is equal to 19 using trapezoid rule. Integral 0 to 1 e raised to power x squared dx. First of all, I will discuss the first and second derivative. I take first derivative is equal to 2x e raised to power x square, and second derivative is equal to 2 e raised to power x square plus 4x square e raised to power x square.
Now I take the maximum value of second derivative and I take its absolute in the interval 0 to 1. When I put the value of x is equal to 0, then in the second derivative, then I get the result is equal to 2. When I put the value of x is equal to 1 in the second derivative, then I get 16.309. But I choose the maximum value of the second derivative and its absolute, which is 16.309. Now I put the all values in the formulas and then I get error 0.0167. Now I will discuss the theorems which is related to the error in trapezoidal rule. But first of all, I discuss a question. Using the error term of the Newton forward difference interpolation, derive the expression for error of the composite trapezoidal rule for numerically integration of definite integral, or perform of the error analysis for composite trapezoidal rule. First, the error analysis of the basic trapezoidal rule is performed. For this, suppose that the interval of the integration close interval a to b is equal to x0 to x1 has the length h is equal to x1 minus x0. Using the theorem about the error associated with the Newton forward difference interpolation formula, if a first degree polynomial interpolates a function f of x at the nodes x0 and x1 and f double prime is continuous, then for each x belong in a closed interval x0 to x1, there exists an exile of x in x0 to x1 such that then e of x is equal to h square f double prime of exile of x over 2 alpha into alpha minus 1, where alpha is equal to x minus x0 over h and the value of alpha less than equal to 1 or greater or equal to 0. Therefore, the error terms associated with the trapezoidal rule in approximating x0 integral x0 to x1 f of x dx is obtained as follows. Error of trapezoidal, then error of trapezoidal is equal to x0 to x1 h square f double prime of exile of x over 2 alpha into alpha minus 1 dx. Now I discussed the intermediate value theorem. Suppose that f of x is continuous function on the interval a to b, then each beta between f of a and f of b there exists a point eta in closed interval a to b such that f of eta is equal to beta. Since the product alpha into alpha minus 1 does not change its sign on closed interval x0 to x1 and f double prime is continuous, by the weighted mean value theorem for integrals there exists a point x is equal to s in x0 to x1 for which exile is equal to exile of s, then and the error term becomes then e is equal to h square f double prime of exile over 2 integral x0 to x1 alpha into alpha minus 1 dx. Any point x belong to closed interval x0 to x1 can be expressed as x is equal to x0 plus alpha h, where the value of alpha less than equal to 1 or greater than equal to 0. Moreover, when x is equal to x0, then x is equal to x0 to plus alpha h and the alpha is equal to 0. When x is equal to x1, then x is equal to x0 plus alpha h, then alpha is equal to 1.
Then I get x is equal to x naught plus alpha h and dx is equal to h d alpha. Now I put the value of dx in equation number 1, h d alpha. Now in this equation I put the value of dx, h d alpha and integrate and take interval 0 to 1. Now I multiply alpha in this term and I integrate this term and I put the upper and lower values. Now I put the upper and lower limits in this equation. After the simplification I get this result, which is minus 1 over 12 h cube f prime of exile. This is the error term for the single application of the trapezoid rule in A to B with order H3. Now I will discuss the next theorem, weighted mean value theorem for integrals. Suppose that f of x and g of x are continuous function on A to B and g of x does not change its sign on A to B, then there exists a number exile in A to B such that integral A to B f of x g of x dx is equal to exile of f of exile integral A to B g of x dx. For the composite trapezoidal rule, the interval A to B is divided into n sub-interval by the nodes x0, x1, x2 and up to so on xn with equal spacing. H is equal to xj minus xj minus 1 and is equal to b minus a over n, where the value of j is equal to 1, 2, 3 and up to so on, and the trapezoidal rule is applied in each of the n sub-intervals separately. Thus overall for the n sub-intervals has the form. Then I get this equation is equal to minus 1 over 12 h cube f prime of exile 1 minus 1 over 12 h cube f double prime of exile 2 and up to so on minus 1 over 12 h cube f double prime of exile n. Now I write this equation in the summation form, where exile of j belongs to the jth subinterval xj minus 1 to xj. Now I put the value of h in this equation and after the simplification I get E is equal to minus b minus a over 12 h square f double prime of eta, where 1 over n summation j is equal to 1 to n f double prime of exile j is considered as the mean or average of values of f double prime on A to B, laying between its maximum and minimum value of f double prime. Hence intermediate value theorems, there exist eta in A to B such that f double prime of eta equal the average value. This complete the derivation. The error term of the composite trapezoidal rule is order of H2. Now I discuss the disadvantages. One drawback of the trapezoidal rule is that error is related to the second derivative of the function, and the second disadvantage is more complicated approximation formulas can improve the accuracy for curves. These include using second and third order polynomial. And the third disadvantage is the trapezoidal rule is not as accurate as Simpson's rule when the underlying function is smooth. And the last disadvantages do not work so well for discontinuous integrands.
Now I will discuss the advantages. It's easy of use, powerful convergence properties, straightforward analysis. The trapezoidal rule is exact for piecewise linear curves such as an ROC curve. Now I will discuss the application, that is a method to calculate approximately the value of the definite integral. The trapezoidal rule is a rule that evaluates the area under the curves by dividing the total area into smaller trapezoid. And the third application, larger number of sections generally leads to smaller difference between volumes calculated by trapezoidal rule. And the third application, by this method we find the maximum velocity. And the last application, trapezoidal rule is used to estimate arc length. Bismillahirrahmanirrahim. My name is Ikra Fatima, and today I will present the topic, which is the Simpson's 1/3 rule. Let's see some history and brief introduction to Simpson's 1/3. History इसकी ये है कि this method is credited to the mathematician Thomas Simpson, 1710 to 1761 of England. However, later on, Johann Kepler used similar formulas over 100 years prior. That's why sometimes this method is called Kepler's rule. Here is some brief introduction to Simpson's 1/3 rule. In numerical analysis, Simpson's rule method is a technique for approximating definite integral. यानी कि इसको हम definite integral को approximate करने के लिए use करते हैं. Simpson's 1/3 rule is an extension of trapezoidal rule, and it obtained when we putting n is equal to 2. Next, I have derivation of Simpson's 1/3 rule. Definition के बाद हमने derivation में हम सबसे पहले ये देखेंगे कि हमारे पास ना न्यूटन कोट्स क्वाड्रेचर फार्मूला होता है. न्यूटन कोट्स क्वाड्रेचर फार्मूला, उस फार्मूला में अगर हम जैसे कि मैं पीछे बता के आई हूँ कि n = 2 पुट करने पर हमें ये जो है वो इसका फार्मूला मिलता है. तो यहाँ पर अगर इस फार्मूला में मैं n = 2 पुट कर दूं, तो जैसे कि ये मैंने सारा यहाँ पर फार्मूला लिखा हुआ है. इस फार्मूला में मैंने जब n = 2 पुट किया, इस सारे फार्मूला को मैंने इक्वेशन नंबर A का नाम दिया है. और इस इक्वेशन A में मैंने पुट किया है n = 2, और उसके बाद निगलेक्टिंग थर्ड ऑर्डर एंड हायर ऑर्डर डिफरेंसेस, यानी ये जो डिफरेंसेस है हमारे पास डेल्टा y0, डेल्टा स्क्वायर y0, डेल्टा क्यू y0 एंड सो ऑन, यहाँ पर डेल्टा 6 y0 एंड तक लिखा हुआ है. तो यहाँ पर जो मैंने n = 2 पुट करना है, तो थर्ड ऑर्डर जो टर्म्स हैं उनको निगलेक्ट करना है. यानी कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि निगलेक्टिंग थर्ड ऑर्डर एंड हायर ऑर्डर डिफरेंसेस, थर्ड से जो ज्यादा ऑर्डर के डिफरेंसेस होंगे उनको निगलेक्ट करना है. और उसके बाद हमें ये वाली चीज मिलती है x0 से xn f(x) dx which is equal to h2 y0 plus h/2 delta y(0) plus 1/2 8/3 minus 4/2 into delta square y(0). एंड नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आ जाता है h2 y0 plus 2 delta y0 plus 1/2 4/6 delta square y(0), and the last step in this page is h2 y0 plus 2 delta y0 plus 1/3 delta square y0. नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते जाते हैं. तो हमारे पास जो x0 से x2 हमारे पास सब इंटरवल है, सेगमेंट है, इसमें 2 सब इंटरवल है x0 से x2. इसकी हमें जो है वो इंटीग्रेशन मिल गई, और ये हमारे पास x0 से x2 f(x) dx बराबर आ गए h/3 और y0 plus y2 plus 4y1. सिमिलरली अगर यही चीज x2 से x4
के लिए की जाए, जो कि इंटीग्रेशन के हमने सेगमेंट बनाए हुए हैं और इसमें हमारे पास ये सब इंटरवल है x2 और x4। इस पर अब मैंने इंटीग्रेशन जो है फाइंड आउट करनी है, तो इसके लिए सेम वही चीज की, और यहाँ पर मेरा पॉइंट जैसे कि यहाँ पर है, और नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आ गया जैसे कि ये है h2y2 + 2 डेल्टा y2 + 1/3 डेल्टा क्यूब y नॉट। नेक्स्ट हमारे पास है h2y2 + 2y3 - y of 2 + 1/3 y4 - 2y3 + y2, and the last step is h2y2 + 2y3 - 2y2 + 1/3 y4 - 2y3 + y2। और मतलब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे कैलकुलेशंस को, और नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास जैसे कि यहाँ पर है h2y3 + 1/3 y4 - 2y3 + y2, और इसको हम सिंप्लीफाई करते गए तो ये चीज बन गई लास्ट पे। और ये हमारे पास x2 से x4 के लिए जो है इंटीग्रेशन की वैल्यू है, तो ये हमारे पास है y2 + 4y3 + y4, and same for x4 to x6 and so on for xn - 2 and xn। अब हमारे पास x0 से लेकर xn तक हमने सारी जो सेगमेंट्स थे उनके सब इंटरवल्स पर वैल्यू जो इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर लिया, और उसके बाद अगर हम जो पीछे हमने फाइंड आउट किया है उनको I1 का नाम दें, फिर I2 का, I3 का, एंड सो ऑन In का नाम देते जाएं, तो लास्ट पे अब हमारा काम क्या होगा कि हम इन इंटरवल्स को ऐड करते जाएंगे। नो एडिंग अबव इन इंटीग्रल्स। अब ये I1 I2 एंड सो ऑन In, जैसे कि x0 से x2 I1 हो गया, x2 से x4 I2 हो गया, एंड xn - 2 से xn जो है वो In हो गया। इन सबको ऐड किया तो x0 से x of n f of x dx is equal to h/3 y0 + yn + 2 y2 + y4 + y6 and so on yn - 2 and +4 y1 + y3 + y5 and so on yn - 1। तो ये हमारे पास सिम्पसन्स का 1/3 रूल का जो है वो फार्मूला है, जिसको हम यूज करते हैं फॉर एवेल्युएशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स, और ये फार्मूला तब सूटेबल होता है अगर n जो है वो हमारे पास 2 का मल्टीपल हो। नेक्स्ट वी हैव एरर डेरिवेशन एंड सिम्पसन रूल। तो जैसे कि हमें पता है कि हमारा सिम्पसन रूल जो है वो ये है, जो कि a से b f(x) dx which is equal to f y0 + yn + 2y of 2 + y4 and so on yn - 2 + 4 y1 + y3 + y5 + so on yn - 1। यहाँ पर हमें पता है कि जो h है वो हमारा बराबर होता है b - a/n, और n यहाँ पर हमारे पास इवन है, क्योंकि ये इवन नंबर, इवन इन n = 2 हो, मतलब इवन हो तो तब ये होल्ड करता है। उसके बाद है हमारे पास y0 y1 and so on yn are the values of y is equal to f of x at x0 x1 x2 and so on xn। मतलब हमारे पास y0 f of x0 के बराबर है, y1 f of x1 के बराबर है, y2 f of x2 के and so on yn जो है इक्वल टू है f of xn। नेक्स्ट पे अप्लाई टेलर सीरीज एक्सपेंशन ऑन एफ ऑफ एक्स। अगर हम टेलर सीरीज एक्सपेंशन अप्लाई करें, मतलब वो हमें बताती है किसी भी फंक्शन पर अगर टेलर सीरीज अप्लाई करते हैं तो वो हमारे पास इस फॉर्म का बनता है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच एफ ऑफ डैश एक्स प्लस एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इनटू एफ ऑफ डबल डैश ऑफ एक्स एंड प्लस सो ऑन, जो है वो आगे वाली टर्म्स। इसको हम जनरल जो है वो टेलर सीरीज कहते हैं। इस सीरीज में अगर हम एक्स को रिप्लेस कर दें x0 से और h को रिप्लेस कर दें x - x0 से,
और ये जो मेरी एफ ऑफ एक्स वाली पहली इक्वेशन है इसको मैंने स्टार का नाम दिया। अब इस स्टार इक्वेशन में अगर मैं ये वाली सब्स्टिट्यूशन कर दूं तो x को x नॉट से मतलब रिप्लेस कर दूं और h को x माइनस x नॉट से, तो नेक्स्ट स्टेप में मेरे पास ये चीज बन जाती है सिंपली। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया। अब मेरे पास जो ये सेगमेंट x नॉट से x2 इंटीग्रेशन का और ये वाला, इस पर मैंने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये x नॉट से x2 में f ऑफ x dx का मेरे पास क्या वैल्यू आएगी, f ऑफ x नॉट सिंपली जब मैं x माइनस, यानी कि चीज मेरे पास वही है, इक्वेशन 1 ही है, लेकिन इक्वेशन 1 पर अब मैंने ये इंटीग्रेशन अप्लाई कर दिया, तो वो मेरे पास x नॉट से x2 ऑफ x dx बराबर आ जाएगी x नॉट से x ऑफ 2 f ऑफ x नॉट प्लस x माइनस x नॉट f ऑफ डैश x नॉट प्लस x माइनस x नॉट का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल f डबल डैश ऑफ x नॉट प्लस सो ऑन। अब इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन हमें ये बताती है कि 1 की इंटीग्रेशन x है, तो इसी तरह f ऑफ x नॉट के साथ हमारे पास 1 है, तो यहाँ पर x आ जाएगा। और वही प्रोसेस के अगर फंक्शन की पावर में एक ऐड करते हैं और वही प्रोसेस नीचे करते हैं, तो यहाँ पर जो f ऑफ डैश x नॉट के साथ जो x माइनस x नॉट है उसका स्क्वायर हो जाएगा और नीचे वही हमारे पास 2 आ जाएगा और 2 इंटू 1, क्योंकि 1 का फैक्टोरियल भी साथ मल्टीप्लाई हो रहा है बटे में। उसके बाद x माइनस x नॉट का क्यूब प्लस x माइनस x नॉट का क्यूब डिवाइड बाय 3 इंटू 2 और मल्टीप्लाई इंटू f डबल डैश ऑफ x नॉट प्लस सो ऑन। और x नॉट से x2 इसमें मैंने इसकी अपर और लोअर लिमिट्स पुट करनी है। अब पुटिंग लिमिट्स, नेक्स्ट स्टेप ये है, लिमिट पुट करने के बाद सिंपली ये वाली वैल्यू आ जाएगी और इसको हम लिख सकते हैं 2hy नॉट की फॉर्म में, क्योंकि हमें पता है कि f ऑफ x नॉट हमारा बराबर है जब हम फंक्शन में f ऑफ x नॉट जो मतलब फंक्शन में जब हम x नॉट पुट करें तो हमारे पास y ऑफ 1 y नॉट आ जाता है। तो इसी तरह यहाँ पर जो x2 माइनस x नॉट है, ये चीज इसको मैंने 2h कह दिया और f ऑफ x नॉट को y नॉट कह दिया, तो यहाँ से x2 माइनस x नॉट इंटू f ऑफ x नॉट की जगह पर 2hy ऑफ नॉट आ गया और प्लस 2h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल y ऑफ नॉट प्राइम, क्योंकि अगर f x ऑफ नॉट का प्राइम है तो ये y नॉट का प्राइम हो सकता है। और नेक्स्ट में इधर 2h स्क्वायर था तो ये वही चीज है, लेकिन इसका ऊपर क्यूब है तो 2h का क्यूब हो जाएगा, नीचे 3 और 3 का फैक्टोरियल है और प्लस हमारे पास नेक्स्ट टर्म है 2h 4 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल एंड y डैश ट्रिपल डैश y नॉट ट्रिपल डैश प्लस सो ऑन, और इसको कोई नंबर कह दिया। ठीक है, next as for x naught x1 we have to find x naught in x1 and x2 points equations also। अगर हम इक्वेशन नंबर 1 में x इक्वल टू x1 पुट कर दें तो हमारे पास ये चीज आ जाएगी f of x1 f of x naught plus x minus x naught f of dash x naught plus x minus x naught का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल f डबल डैश x naught plus so on। और ये f of x1 हमारे पास y1 के बराबर है, तो यहाँ से हमारे पास x1 के करस्पॉन्डेंस y1 आ गया। इसी तरह अगर हम इक्वेशन नंबर 1 में x इक्वल टू x2 पुट कर दें, तो वहां पर हमारा सिंपली x था, उसके बाद हमें x1 भी चाहिए था, हमें x2 भी चाहिए था, और इसीलिए मैंने x इज इक्वल टू x1 पुट किया इक्वेशन 1 में, तो मेरे पास ये f of x1 बन गया जिसको मैंने y1 का नाम दे दिया ये वाला। उसके बाद मैंने x इज इक्वल टू x2 इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया, तो मेरे पास f of x2 बन गया जिसको मैंने y2 का नाम दे दिया। इसी तरह मेरे पास y1 भी आ गया, y2 भी आ गया। As we know that by Simpson's rule area under the curve x naught x2 a नॉट, इसको हम कहते हैं एरिया अंडर द कर्व को, और ये हमारे पास x नॉट और x2 जो सेगमेंट है सिर्फ उसी के लिए है, नेक्स्ट के लिए हम फाइंड करते जाएंगे। तो a नॉट इज इक्वल टू h/3 y नॉट प्लस 4y1 प्लस y2 है। इसको अगर मैं इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दूं, नेक्स्ट स्टेप में है नाउ सब्स्टिट्यूटिंग फॉर y1 एंड y2 इन 3 में। अब इक्वेशन नंबर 3 में नजर आ रहा है कि y1 और y2 को अगर सब्स्टिट्यूट कर दे तो ये हमारे पास a नॉट की वैल्यू आ जाएगी जो कि एरिया अंडर द कर्व है। तो यहाँ पर मैंने इक्वेशन नंबर 3 में y1 और y2 की जगह पर वैल्यू पुट की, तो ये चीज बन गई। इस वाली इक्वेशन को मैंने इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे दिया। नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट।
अब हमें पता है कि हमने एरर फाइंड करनी है। एरर के लिए हम क्या करते होते हैं, एग्जैक्ट में से अप्रोक्सीमेट निकालते हैं। तो पीछे हम देख लेते हैं। तो यहाँ से मैंने 2 - 4 किया, जो कि हमारी एग्जैक्ट में से अप्रोक्सीमेट को माइनस किया, तो ये मेरे पास x नॉट से x2 ऑफ x dx माइनस a नॉट, और इसकी वैल्यू मेरे पास आ गई ये 4/15 - 5/18 इंटू h रेज़ टू पावर 5 y नॉट ऑफ 4 प्लस सो ऑन। नेक्स्ट ये इसको मजीद सिंप्लीफाई किया तो -h5/90 y नॉट 4 प्लस सो ऑन। नेक्स्ट में यह है कि omitting h6 and higher powers, the principal part of error in x naught से x2 is h5 divided by 90 y naught of raised to power 4 and so on। मतलब कि हमने सिर्फ x नॉट से x2 सेगमेंट पर ये एरर फाइंड किया है। सिमिलरली हमारे पास so on कहने का मतलब ये है कि नेक्स्ट x2 से x4 and x4 से x6 and so on xn - 2 से xn तक हमारे पास ये इसी तरह से चलता जाएगा। नेक्स्ट है the total error is minus h raised to power 5 divided by 90 y naught raised to power 4 plus y1 raised to power 4 plus so on। एंड हमें पता है कि जो e है उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन होती है n h raised to power 3 divided by 90 into m। यहाँ पर m को बताते चलो वो क्या होता है। m हमारे पास होता है कि हम तमाम वैल्यूज का जो मैक्सिमम होता है उसको फिर m का नाम देते हैं। मतलब हमारे पास y नॉट 4 प्लस y1 4, y नॉट का जो फोर्थ डेरिवेटिव होगा, फिर y1 का फोर्थ डेरिवेटिव होगा एंड प्लस सो ऑन y2 3 एंड yn तक जो इनके फोर्थ डेरिवेटिव होंगे, वहां पर जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो वैल्यू हम m को देंगे। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट में हमारे पास है कि e की एब्सोल्यूट वैल्यू शुड बी लेस देन b माइनस a रेज़ टू पावर 5 डिवाइडेड बाय 180 n रेज़ टू पावर 4 एंड मैक्सिमम ऑफ f फॉर डेरिवेटिव ऑफ x। और इसी तरह ये हमारे पास जो है वो रिक्वायर्ड फार्मूला है फॉर सिम्पसन्स एरर बॉन्ड। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे एग्जांपल है जो कि सिम्पसन्स रूल एग्जांपल के नाम से मैंने लिखा हुआ है। इसमें यह है कि एवेलुएट द इंटीग्रल 100 to 200, इसकी अपर लिमिट है 200 और लोअर लिमिट है 100 dx ओवर log of x। यहाँ पर n की वैल्यू 4 गिवन है यूजिंग द सिम्पसन्स 1/3 रूल। अब हमें पता है कि जब हमें n गिवन हो और अपर और लोअर लिमिट्स गिवन हो तो हमने फाइंड क्या करना है, h फाइंड करना है। और h फाइंड करने का फार्मूला यहाँ पर है b माइनस a डिवाइडेड बाय n। तो b मेरा 200 माइनस 100 करें डिवाइडेड बाय 4 करें तो h की वैल्यू 25 आ जाती है। इसका मतलब है कि हमने जो इंटरवल सब इंटरवल की जो स्पेस रखनी है वो हमारी इक्वली स्पेस होते हैं, इक्वल डिस्टेंस जो है वो सब इंटरवल्स होते हैं। तो इसका मतलब है कि हमारे पास 25-25 का गैप होगा उनमें। तो 100 से 200 के दरमियान में 25-25 के गैप से मेरे पास ये टेबल बनता है इस तरह का 100 125 150 175 एंड 200। और इसके करस्पॉन्डेंट्स मेरे पास फंक्शन क्या था, 1/log of x था। तो 1/log of x में अगर मैं ये सारी वैल्यू करती जाऊँ x की जगह पर 100 125 150 175 तो हमें पता है कि टेबल किस तरह से बनता है। ये मेरी सारी जो है वो y0 y1 y2 y3 एंड y4 जो कि yn भी होता है, वैल्यूज आती जाएंगी। नेक्स्ट एज द गिवन फार्मूला I is equal to h/3 y नॉट प्लस yn। ये हमारे पास फार्मूला क्या है, सिम्पसन्स रूल है, जो कि हम फाइंड कर रहे हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं सिम्पसन्स रूल से। तो वो हमारे पास फार्मूला है कि y नॉट प्लस y1 प्लस 2 y ऑफ 2 प्लस 4 y1 जमा y ऑफ 3। बेसिकली ये अब क्या हो गया हमारे पास, यहाँ पर जितनी वैल्यूज आएंगी हम उसी हिसाब से फार्मूले को लगाएंगे, जो कि हमारे पास होता है कंपोजिट फॉर्म में। अब ये सिम्पसन रूल को कंपोजिट फॉर्म में लिख लिया और उसकी जगह पर इसकी सारी वैल्यूज पुट की। h की 25 है 25/3। तो इस तरह से मेरे पास इस सारी इक्वेशन को सॉल्व करने पर आ गया 20.065, जो कि हमारे पास सिम्पसन रूल से मैंने इस इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड आउट की है।
नेक्स्ट है, अब मैंने एक एरर की एग्जांपल ली हुई है, एग्जांपल फॉर एरर एस्टिमेशन, estimate the error in approximating the integrals with n is equal to 4 using Simpson's 1/3 rule. इसमें है इंटीग्रल 1 से 3 और 1/x plus 2 d of x, और इसको मैंने इसकी जो है वो एस्टिमेशन ऑफ एरर फाइंड करनी है यूजिंग सिम्पसन्स 1/3 रूल, जिसको एरर बाउंड भी कहते हैं सिम्पसन 1/3 रूल की, इस गिवन क्वेश्चन के लिए। तो हमें पता है कि जो as we know that the error bound formula for Simpson's 1/3 rule is E की absolute value less than होती है b minus a raised to power 5 divided by 180 into n raised to power 5 maximum of f of fourth time derivative of x। इसको मैंने कोई नंबर स्टार का नाम दे दिया। नेक्स्ट मूव करते हैं। एक्स पे इसको फाइंड आउट करने के लिए जैसे कि एफ ऑफ 4 डेरिवेटिव ऑफ एक्स है, यानी हमने फंक्शन का 4 डेरिवेटिव फाइंड करना है और उस पर उसकी मैक्सिमम वैल्यू चेक करनी है। तो इसके लिए मैंने इसका 4 डेरिवेटिव कैलकुलेट किया, ये वाला, ये फर्स्ट डेरिवेटिव था, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव एंड फोर्थ डेरिवेटिव। जब फोर्थ डेरिवेटिव मिल गया तो उसके बाद हम क्या करेंगे, ये हम S1 और 3 पे इसको चेक कर लेंगे इसकी मैक्सिमम वैल्यू के लिए। 1 और 3 क्लोज इंटरवल है तो हमारे पास 1 पे चेक करेंगे और फिर 3 पे चेक किया, या इसके दरमियान में भी चेक कर सकते हैं, लेकिन चलो मैंने 1 पे किया और उसके बाद 3 पे किया, तो 1 पे मेरी ये वैल्यू आई और इसकी एब्सोल्यूटली यही, तो ये पॉजिटिव है तो वही चीज़ आ गई, और दूसरी जो 3 पे ये वाली वैल्यू आई। अब मेरी मैक्सिमम वैल्यू थी 2.63374, इसको मैंने कोई ये नंबर स्टार में पुट किया जो कि पीछे मैंने लास्ट पेज पे लिखी हुई है। तो मेरे पास ई जो है, एरर जो है, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन आई 1.828986। ये होगी मेरी एग्जांपल। नेक्स्ट पेज पे है एडवांटेजेस, यानी कि जो सिम्पसन रूल है उसके एडवांटेजेस क्या हैं वो देखते हैं। Simpson rule approximates usually to achieve a given level of accuracy faster. Second, approximates the curve as a series of quadratics which individually are easy to integrate. Simpson rule is more accurate because it depends on H4 and error will reach zero faster, unlike trapezoidal rule where error depends on H square. नेक्स्ट पेज पे भी इसके एडवांटेजेस है। Simplicity, higher accuracy than the trapezoidal rule, take less computer time as compare others, not difficult to translate it by any programming language because it's equally enjoyable. And the last one is user can easily pick a suitable step size and order. Now move to the next page. Here is some disadvantages of Simpson's 1/3 rule. First of all, this rule requires even number of integers only. We cannot use this method for odd number of integers. It can only be used for even number of integers. So this is takes to be a disadvantage of this rule. Only when n is multiple of 2 only. And the second disadvantage is this: it is obviously not accurate. There will always be an error between it and the actual integral. Next, integrals allow you to get exact answers in terms of fundamental constants. This is not possible with Simpsons. तो ये भी इसका disadvantage हो गया। और जो लास्ट पे है, it is necessary often to use a large number of ordinate to gain a good approximation to the real integral, so it takes a lot of time. Move to the next page. There are applications of Simpson's 1/3 rule.
इसमें मैं थोड़ा सा ये बताऊंगी कि जो सिम्पसन वन बाय थ्री रूल है वो कब इसको जनरली हम जो है वो ज्यादा यूज करते हैं, किस केस में इसकी एप्लीकेशन को जो है वो ज्यादा प्रेफर किया जाता है, किस टाइप की शेप्स के लिए ज्यादा प्रेफर किया जाता है. So shapes to be preferred generally in Simpson's 1 by 3 rule. The application of Simpson's rule generally involves usage of trapezoid, which can involve as many sides as possible. To have any accuracy in the output, it is recommended to consider a trapezoid. ठीक है. नेक्स्ट में है कि एप्लीकेशन ऑफ सिम्पसन्स फार्मूलाज फॉर वॉल्यूम कैलकुलेशन ऑफ सब सरफेस स्ट्रक्चर्स रिकमेंडेशंस. इन्हीं सब सरफेस स्ट्रक्चर्स की रिकमेंडेशंस के लिए हम जो है वो सिम्पसन्स फार्मूलाज को वॉल्यूम कैलकुलेशन के लिए यूज करते हैं. तो सिम्पसन रूल इज बेस्ड ऑन द आइडिया टू अप्रोक्सीमेट द कर्व एफ विद द सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल. यानी सिम्पसन्स को जो है ये हम तब यूज करते हैं उस कर्व के लिए यूज करते हैं जिसको हम किसी भी एफ का नाम दे रहे हैं या किसी भी और वेरिएबल का नाम दे रहे हैं जब उसकी डिग्री हमारे पास जो है पॉलिनोमियल की 2 हो. यानी ये सिर्फ डिग्री 2 की पॉलिनोमियल के लिए हम यूज कर सकते हैं. ठीक है. और नेक्स्ट में है कि पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये अब हम देख रहे हैं कि इसकी एप्लीकेशन किस तरह से वॉल्यूम कैलकुलेशन के लिए यूज होती है सब सरफेस स्ट्रक्चर्स रिकमेंडेशंस के लिए. और p of x is equal to a naught x square plus a1 x plus a2 and the graph of the function, ये नीचे ग्राफ भी है कि इस तरह से हमारे पास ये जो है फार्मूला वर्क करता है. एंड द ग्राफ ऑफ द फंक्शन p इज अ पैराबोला बनता है वेयर Assalamu alaikum. I am Umme Farwa Mohit and I am presenting Simpson's 3 by 8 rule. I have made this entire document in LaTeX. So we will be covering the following topics, starting with the history of Simpson's rule, then derivation of Simpson's 3 by 8 rule and its example. After that, error in Simpson's 3 by 8 rule and derivation for Simpson's error in Simpson's 3 by 8 rule and its example. After that, the composite Simpson's rule and its example. And lastly, pros and cons and its application. So we will start off with the history of Simpson's rule. Simpson's rule was actually invented by Sir Isaac Newton, but Thomas Simpson published it again in 1743. It is more accurate than the trapezium rule because it fits a number of parabolas to the curve rather than the straight lines. To use Simpson's rule, you must have an even number of intervals or an odd number of ordinates. Now we perform the derivation of Simpson's 3 by 8 rule. As we know this relation, this relation is known as Newton-Cotes quadrature rule. Put n is equal to 3 in above equation and neglecting fourth order and higher order differences, we get integral x naught to x3 f of x dx is equal to h into 3 y naught plus 9 by 2 delta y naught plus 1 by 2 into 27 by 3 minus 9 by 2 delta square y naught plus 1 by 6 into 81 by 4 minus 27 plus 9 delta cube y naught. In this step, we will substituting delta y naught with y1 minus y naught, delta square y naught with y2 minus 2y1 plus y naught, and delta cube y naught with y3 minus 3y2 plus 3y1 minus y naught. Now we will further resolve this equation and we get this equation in result, which is 3h by 8 into y naught plus 3y1 plus 3y2 plus y3. Similarly, the same procedure is followed for the interval x3 to x6 and we get the equation in the result. Also for the interval x6 to x9 and so on. By adding above integrals, we have
integral x naught to xn f of x dx is equal to 3h by 8 sum of extreme ordinates plus 2 times of ordinates which are the multiple of 3 plus 3 times of all remaining ordinates. This is called Simpson's 3 by 8 rule for evaluation definite integral. This formula is suitable if n is multiple of 3. Now we will look at an example to better understand this. Integral 0 to 6 dx over 1 plus x square, where h is equal to b minus a over n and n must be the multiple of 3. So first of all, we have to find the value of h, which can be obtained using this equation. The value of b is 6 and the a is 0 and n is equal to 6. H is equal to 1. Now we will construct a table of the functional value 0 corresponding to 1 and 1 corresponding to 0.5 and so on. Y0 is equal to 1, Y1 is equal to 0.5 and so on. The formula of Simpson's 3 by 8 rule is this. Putting all values in this formula and resolve this equation, we get the result approximate, which is 1.3571. Now we will perform the derivation for error in Simpson's 3 by 8 rule. Simpson's 3 by 8 rule is the following equation, where h is equal to b minus a over n. N must be the multiple of 3. Y0, y1, y2 up to yn are the values of y is equal to f of x at x0, x1, x2 and so on xn. Taylor series expansion of f of x about x0 is f of x is equal to f of x naught plus x minus x naught over 1 factorial f dash of x naught plus x minus x naught square over 2 factorial f double dash of x naught plus so on. Now we apply integral on the both side of the equation. Next we will further resolve the integral. We get the following equation in the result. x3 minus x naught f of x naught plus x3 minus x naught square over 2 factorial f dash of x naught plus x3 minus x naught cube over 3 into 2 factorial f double dash of x naught plus so on. Replace x3 minus x naught by 3h and f of x naught by y naught. We get the following equation. 3h y naught plus 3h square over 2 factorial y naught dash plus 3h cube over 3 factorial y naught double dash plus 3h raised to the power 4 over 4 factorial y naught triple prime plus 3h raised to the power 5 over 5 factorial y naught fourth derivative. By Simpson's 3 by 8 rule, area in interval x naught x3 is a naught is equal to 3h over 8 y naught into y naught plus 3y1 plus 3y2 plus y3. Putting x is equal to x1 in equation number 1. In equation number 1, put x is equal to x1 and we get the following equation in the result. And resolve the equation, we get y1 is equal to y naught plus h over 1 factorial y naught dash plus h square over 2 factorial y naught double dash plus so on in the result. Similarly, put x is equal to x2 in equation number 1. We get the following equation in the result. And similarly, for x is equal to x3, we get the following equation in the result. Substituting for y1, y2 and y3 in equation number 2. Equation number 2 is this. Put y1, y2 and y3 in equation number 2. We get the following equation in the result.
Now we will further resolve the equation. We get the following result. The first four terms cancelled with each other, and we get a naught is equal to 3h y naught plus 9 by 2 h square y naught dash plus 72 by 16 h cube y naught double dash plus 162 over 48 h raised to the power 4 y naught triple dash plus 396 over 192 h raised to the power 5 y naught fourth derivative plus so on in the result. Now subtract equation B from equation A, and we get the following equation in the result. Integral x naught to x3 f of x dx minus a naught is equal to 243 over 120 minus 396 over 192 into h raised to the power 5 y naught fourth derivative, and further resolve the equation. We get minus 3 over 80 h raised to the power 5 y naught fourth derivative in the result. Omitting h raised to the power 6 and higher power, the principal part of error in x naught x3 is minus 3 over 80 h raised to the power 5 y naught fourth derivative and so on. The total error is equal to minus 3 over 80 h raised to the power 5 y naught fourth derivative, and this is equal to minus 3 over 80 h raised to the power 5 into y naught fourth derivative plus y1 fourth derivative plus so on, where m is equal to maximum of y naught fourth derivative and y1 fourth derivative. The principal error in the interval x naught x3 is minus 3 over 80 h raised to the power 5 y naught fourth derivative is equal to minus b minus a raised to the power 5 over 6484 y naught fourth derivative. This is the error in Simpson's 3 by 8 rule. Now we will look at an example to better understand this. Estimate the errors using Simpson's 3 by 8 rule. Integral 1 to 4 1 over x plus 2 dx, or interval is 1 4. Here 1 equal less than x and x equal less than 4. A is equal to 1 and b is equal to 4. As we know, the Simpson's 3 by 8 error boundary is less than minus into b minus a raised to the power 5 over 6480 max of f fourth derivative. Now calculate the derivative of f of x, and in this example our f of x is 1 over x plus 2. Find its first fourth derivative. Now check at interval 1 4. Put x is equal to 1 in the fourth derivative and we get 1.58025 in the result, and similarly put x is equal to 4 in the fourth derivative and we get 0.049383 in the result. The maximum value is 1.58025. Put the values in this equation. Sorry, I forgot to mention equation number 3 here. At the end, we get 0.059259 as the error bound of Simpson's 3 by 8 rule. Now we will look into the definition of the composite Simpson's rule. To generalize this procedure of an arbitrary integral a to b f of x dx, choose an even integer n, subdivide the interval a b in n subintervals and apply Simpson's rule on each consecutive pair of subintervals.
Now we will look at an example to better understand this. Using the combination of Simpson's 1 by 3 and Simpson's 3 by 8 rule, evaluate the integral 1 to 8 f of x dx by the given table. Here n is equal to 7. So first of all, we have to find the value of h, which can be obtained by using this equation. And h is equal to 1. H is the interval difference. Here the interval difference is 1. We arrange the table for both Simpson's 1 by 3 and Simpson's 3 by 8 rule. For Simpson's 3 by 8 is suitable for n is equal to 3, and Simpson's 1 by 3 is suitable for n is equal to 2. This is the formula of Simpson's 3 by 8 rule, and this is the formula of Simpson's 1 by 3 rule. Put the values in the following equation and we get 170.33 in the result. Here are few advantages of Simpson's 3 by 8 rule. We can use an odd or even numbers of subinterval rather than just an even number of subinterval as used in the Simpson's 1 by 3 rule. We can converge to estimated integral values much quicker than Simpson's 1 by 3 rule. Has the same order of accuracy as Simpson's 1 by 3 rule when calculating the absolute error. But Simpson's 3 by 8 rule is actually slightly more accurate. But the fraction used in this error will be smaller and then will provide a more accurate error. Simpson's 1 by 3 rule error is equal to minus into b minus a raised to the power 5 over 90x f fourth derivative, and Simpson's 3 by 8 rule error is equal to minus into b minus a raised to the power 5 over 6480 x into the fourth derivative of f of x. Now we will look into the disadvantages of Simpson's 3 by 8 rule. This rule requires multiple of 3 segments only. When calculating the value by hands, this rule is more complicated. Now we will look some applications of Simpson's 3 by 8 rule in real life. It helps to find the area, locate the centroid, find the arc length of a graph, find the surface area of a solid, find the volume of a solid figure, solve the moment of inertia. It is also used to find sectional area, water plane area, submerged volume, longitudinal center of flotation, vertical center of buoyancy. Numerical method is not an elegant subject. It has a lot of technical details, but it's the way by which we solve most of the real world problem according to this. Thank you.